नाउ इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, पहले उसको हम लोग याद करने की कोशिश करते हैं. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स, देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल इज दैट दे लाई बिटवीन S and P or by D block elements, they lie between S and P block elements. ठीक है, they lie between S and P. This is their position. These are the D block elements. Now, if I talk about the group numbers, so the group number it starts. This is the group number 1. This is the group number 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, and then 13 is the group number. 13 group is the P is in the P block elements. ठीक है. Now, what are the D block elements? उसको लिख लीजिएगा. Write it with me. I'll start with scandium, suc, T, V, cr, man, feco, nicosa. This is how you can remember the first period of the D block element, nicosa. Also, an important part is to remember their atomic numbers. है ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी देखा था. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and this is 30. Now, below scandium, how to remember the elements? See here, guys. Now, after scandium, we have second. This is second year लाएंगे AC. Second year लाएंगे AC. We have scandium, then we have yttrium and lanthanum, then we have actinium. Second year लाएंगे AC. Now, when you bring AC, you want to drink T inside the AC, so you'll write T zara half. This is titanium, this is zirconium, and this is hafnium. Then we have V. से आप याद रखिएगा वो नवाब था. ठीक है. What is this? This is vanadium. Then NB, it is niobium, and after that we have tantalum. Ta is tantalum. Then we have Cr. Cr is chromotan. Here we have chromium, then we have molybdenum, and then we have tungsten. है ना? That's what tung. Chromotan. For manganese, man tak re. Man tak re. Now, what are these elements? I hope you know. The first one is manganese. Then we have technetium, and after that, Re, it is rhenium. Re is rhenium. Then we have Fe, iron. Iron में RuOS. RuOS. Now this is Fe is iron, as you know. Ru is rhodanium, and OS is osmium. Then we have cobalt. You can remember it, right? Con rahega. Cobalt. RH is rhodium. Ireland. IR is iridium. Then we have nickel. PDPT, which you can remember as नहीं पढ़ पाता. For copper, you can remember as क्यों आगे आऊं. हाँ, अक्सर जो बेकार दोस्त होते हैं कुछ काम पढ़ने पे क्या कहते हैं, क्यों आगे आऊं. Then the last group is ZnCdHg. ZnCdHg. Now, first of all, you will write the 3D series. This is the 3D series. This is the 3D series. This is the 4D series. This is the 5D series. ठीक है. So 60 है, 60 के बारे में लेकिन आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं. 3D, 4D and 5D are what we have to study. Now 3D series में the general electronic configuration, if I talk about the general electronic configuration, then it is going to be start with argon 4s2 in general, and 3D fills from 1 to 10. Since we are filling the electron in the 3D subshell, we are filling the electrons in 3D subshell, we call this series as the 3D series. ठीक है. Make some space. देखिए नोट्स आप लोगों को अभी नहीं लिखना है, कुछ छोटी छोटी बातें उसको हम लिखने के लिए कहेंगे, उसी को लिखिएगा. ठीक है. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज गोइंग टू बी, वी विल हैव आर्गन 4s2
3D is going to be filled from 1 to 10. Then for the 4D series, you will have again argon, no, not argon, argon के बाद कौन होता है? Krypton, right? Krypton, and here you will have 5s2 in general and 3D 1 to 10, है ना? 3D 1 to 10. 3D लिख दिया, my bad guys. 4D 1 to 10, my bad, not 3D, because we are filling in the 4D series, it will be 4D. 4D 1 to 10. For 5D, there is after Krypton, what do you have? Xerox. Xerox is XE, and here you're going to have 6s2, 4f14 in general, 4f14, except for lanthanum. And lanthanum में 4f0 होता है. Then you have the lanthanides, actinides. और इसके बाद आएगा आपके पास 5D 1 to 10. So we are filling the electrons in the 3D subshell, that is why it is 3D series, 4D subshell, that is 4D series, and 5D subshell, that is why it is 5D series. Okay? Now, this is general things about the D block elements. Now, D block elements, these are also known as D block elements. Are AKA transition metals or transition elements बोल दीजिए आप, transition elements. Transition elements as they lie between metals of S block and non-metals of P block. Now, this was the initial definition of transition elements, because यहाँ से property ना metallic property की बात करें, metallic property is decreasing like this. So ये transition elements है ना, how the metallic property metal से आप non-metal की तरफ जा रहे हैं, transition कर रहे हैं. That is why they were known as transition elements. Now, a new definition of transition was transition elements या transition metals. Please write. और इसको लिख लीजिएगा. Transition elements have incomplete part, जैसे लिख लिए partially filled D subshells in their ground state or in common oxidation states. Or in common oxidation state. ठीक है? Since the transition elements should have partially filled D subshells, that is why the elements of group 12, that is ZnCdHg, are not considered transition metals, as they have
fully filled D10 configuration. ठीक है, right? Copper also has D10 configuration, but its +2 state has D9 configuration. Therefore, it is considered transition reactive. ठीक है no. There are some exceptions in the electronic configuration. ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब ऐसे बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी लिख लीजिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. For example, if you have scandium 21, okay, argon 4s2 3d1. Let us suppose you have iron 26. It's also going to be argon 4s2 3d6. But certain electronic configurations, such as that of chromium 24, this is argon 4s1 3d5, copper, which is 29, argon 4s1 3d10. ठीक है, ड्यू टू more stable half filled and fully filled desumption. Okay, Safia and Fadil, everyone is here. ठीक है, यहाँ तक लिखिए, उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन सब आ रहा है. ठीक है, रेज योर हैंड वंस यू डन राइटिंग टिल हियर. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिए. All of you know these things, right? Yes or no? Aliza, Deborah, Rachita, Fadil. You guys remember Yes, these sir. things from 11th standard, है ना? Chromium and Yes, copper sir. वगैरह. ठीक है. Please raise your hand once you're done. Waiting for Aliza. Okay, fine, everyone is done. ठीक है. इसके बाद we have physical properties of transition elements. ठीक है. We have physical properties of transition elements. Now देखिए, इसको लिखने की जरूरत नहीं है. ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे.
फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या क्या है? दे हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, हाई थर्मल एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, मेटल्स की बात हो रही है ना ऑब्वियसली, मैलिबिलिटी, डक्टिलिटी, मेटालिक क्लस्टर, दे आर हार्ड एंड लेस वोलेटाइल, मतलब आसानी से यू कैन नॉट बॉयल देम इजीली, एंड दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं. Now, the physical properties that we have to study in detail is the high melting and boiling points. When you are boiling something, please don't write now. Please try to understand. When you are boiling something, then what we are doing? Tell me. Liquid से कौन से state में जा रहा होता है? Tell me, guys. Liquid से बोलो. When we are Sir, boiling, vapor, gas. vapor. Yes, very good. ठीक है. Now, boiling point, it is very similar to one word that is known as enthalpy of atomization. In enthalpy of atomization, what happens? You have a solid, liquid, gas, कुछ भी होगा आपके पास, आपको उससे इंडिविजुअल एटम बनाना है, ठीक है. सो मेटल्स आर ऑलवेज सॉलिड, दीज आर जनरली सॉलिड. सॉलिड से आपको क्या बनाना है? इंडिविजुअल एटम. नाउ इंडिविजुअल एटम, दैट मींस एन एटम व्हिच इज नॉट इन द, देयर इज नो अदर एटम सराउंडिंग इट. That is only possible when you have gaseous state. Because what is the meaning of gas? Gas means the atoms are not influenced by any other atom. In liquid, there is some force of attraction. In solid, there is a large force of attraction. In gas, one atom is not influenced by other atom of its own kind. Okay, so enthalpy of atomization. Now, these things, high melting point, please try to understand. Okay, high melting point, high boiling point, and high enthalpy of atomization. Now, regarding these things, melting point, boiling point, enthalpy of atomization, we are going to see same trend. We are going to see the same reasons for the trend. We are going to see the same exceptions. We are going to see the same cause of exception also. तो आपके पास अगर हम लोगों को पढ़ना क्या है, we have to understand regarding the concept that we have to understand is three things in one. High melting point के बारे में सवाल आ जाए, सॉरी हाई मेल्टिंग पॉइंट हटाइए, मेल्टिंग पॉइंट के बारे में सवाल आ जाए, या फिर द ट्रेंड फॉर बॉइलिंग पॉइंट के बारे में सवाल आ जाए, व्हाट इज द ट्रेंड, और द ट्रेंड फॉर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन. तो पूरा लिख देते हैं, डेल्टा एच आप लोग समझेंगे नहीं. एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है. अब यहां पहले समझते हैं कि होना क्या चाहिए, ठीक है. लेट अस प्योर लुक एट द लॉजिक, वी विल नॉट लुक एट द डेटा राइट नाउ. हम लोग प्योर लॉजिक से समझने की कोशिश करते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई है, एक तो हाई क्यों है, ठीक है. पहले इसी को समझने के लिए, व्हाई इट इज हाई. नाउ इफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल इज हाई, ध्यान दीजिएगा, लिखने की जरूरत नहीं है. मेटल की मेल्टिंग पॉइंट हाई है, और मेटल में बॉन्डिंग कैसी होती है? मेटालिक बॉन्डिंग होती है. मेटालिक बॉन्डिंग होती कैसे? यू हैव एन एटम ऑफ मेटल, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड यू हैव अनदर एटम ऑफ मेटल, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दो न्यूक्लियस के बीच में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाएं, when you have large number of electrons between the nucleus, ठीक है, यहाँ पे आपके पास large number of electron आ जाए, then this nucleus and this nucleus will be attracted towards the electron. This nucleus is attracted in the right side towards towards the electron. Now this second nucleus is attracted also towards the electron in the left direction. अब दोनों क्या हो रहे हैं? एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, overall. Because of what? Because of the electrons. That means a general rule that we can say is, as the valence electron increases, melting point should also increase. बोल सकते हैं ऐसा? yes or no please tell me guys. क्या ख्याल है? अरे भाई नहीं समझ में आया क्या? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या हो रहा है? बिकॉज वी आर हैविंग लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज व्हाई द मेल्टिंग पॉइंट इज इंक्रीजिंग, राइट? द मेल्टिंग पॉइंट, और नॉट इंक्रीजिंग, rather the melting point is very high. Now another point to be noted is, not all the, if we talk about valence electron, not all the valence electron will be available for metallic bonding, because जब pairing हो जाएगी ना, then the electron will not be as free. When the electron is not free, then what is going to happen? They will not be taking part in the metallic bonding, ठीक है. तो यहाँ पे हमारे पास रूल क्या आएगा? यहाँ पे रूल आएगा, as the number of unpaired valence electron increases, the melting point, boiling point, enthalpy of atomization increases. ठीक है. Now we will look at the data. Data is also going to say the same thing.
If we talk about the trend in the melting point, then the melting point trend is something like this. So you can see here that there is an increase in the number of valence electron when I go from titanium to vanadium to chromium. Okay. Now, in manganese somehow it is decreasing, but in Fe as soon as there is a pairing of electron, ना देखिए, अगर आप लोग को याद नहीं, शक्ति टी में होगा आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे होगा 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे आप क्रोमियम में आपके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बिकॉज 4s1 3d5, Mn में भी आपके पास d5 इलेक्ट्रॉन्स है ना, एंड 4s2 ऑल्सो. Fe में आपके पास 3d6, दैट मींस 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. कोबाल्ट में यू विल हैव हाउ मेनी, 3 2 1, इस तरह से. ठीक है. Now, as you can see, it is almost following the trend, whatever trend we are having, na, that the number of unpaired electron increases, so melting point increase kar diya. But here we are having an exception of what? An exception of manganese. We'll have to deal with this exception of manganese. Similar type of thing is also shown when you see the enthalpy of atomization. When you look at the enthalpy of atomization, here also we are having almost similar data. The trend is almost similar for the enthalpy of atomization also. See, this is the enthalpy of atomization. Here also you can see that there is a decrease, a sudden decrease for manganese. ठीक है. तो ये decrease हो क्यों रहा है उसके बारे में. See, the exception क्या है यहाँ पे? Manganese is the exception ना. Manganese में decrease नहीं करना चाहिए था, but manganese is decreasing. So what is happening? The lower value of melting point, boiling point, or enthalpy of atomization for Mn is due to the more stable half-filled D5 configuration, D5 configuration, D5 configuration. The electrons are held by nucleus and not available for metallic bonding. And not available for metallic bonding. All of you understood this? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. ठीक है, ये मैग्नीज है, मैग्नीज. ठीक. ये सारी चीज के लिए हो गया. ठीक है ना. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, तीनों टॉपिक्स खत्म. ठीक है. एनसीईआरटी, एनसीईआरटी में भी अगर आप देखेंगे तो यहीं पे आपके पास ये सारी बातें खत्म हो जाएंगी. Just give me a second. छोड़िए. Now, next we are going to study the atomic properties. Mainly, we are going to learn about atomic radii, ionic radii, and the ionization enthalpy. ठीक है, ध्यान दीजिएगा जरा. Next property is atomic and ionic radii. ठीक है, ध्यान दीजिए. एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस पढ़ाने से पहले इन जनरल आपको पता होना चाहिए कि ट्रेंड वगैरह के बारे में जब बात करते हैं ना, when we are talking about the trends, that when you go, when the atomic number increases left to right, when we are going in a series, we are going, उसका क्या मतलब होता है, and what effect are expected, that when we are going from left to right, then what should happen exactly. ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा. We are in a period, जब भी हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, we are in a single period. सिंगल पीरियड यानी कि देखिए, अगर इफ यू आर इन द फर्स्ट पीरियड ना, देन आपके पास इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा? इलेक्ट्रॉन विल ओनली गो टू द फर्स्ट शेल. सेकंड पीरियड में जब आप जाएंगे, देन द इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू गो इन द सेकंड शेल. थर्ड में इट इज गोइंग टू गो इन द थर्ड शेल. फोर्थ में जाइएगा तो फोर्थ शेल में इलेक्ट्रॉन्स जाएगा. द इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग इन द सेम शेल.
ये याद कर, ये समझने की चीज है, आप लोग को ये चीज याद रहनी चाहिए कि वेन एवर वी आर फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड वी आर गोइंग व्हाट इन अ सीरीज, एटॉमिक नंबर जब एक एक करके बढ़ता है ना, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, we are filling the electrons in the same shell, in the same shell। आप ध्यान देते हैं, सेम शेल की बात होगी, हम लोग कहां पे हैं, सेम शेल, एंड इन द सेम शेल, ठीक है। एंड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग द एटॉमिक नंबर इन द 3D सीरीज की अगर हम बात करें तो हम 21 में है, फिर 22, फिर 23, फिर 24 एंड सो ऑन, ठीक है। अब बताइए, जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है तो क्या चेंज, मतलब क्या होता है, एटॉमिक रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं हम, एटम की बात कर रहे हैं। एटम में आप चेंज बताइए कि एटॉमिक नंबर जब चेंज होता है, जब बढ़ता है, व्हेन इट इज इंक्रीजिंग, तो क्या इलेक्ट्रॉन में चेंज आता है, क्या प्रोटॉन में चेंज आता है, क्या न्यूट्रॉन में चेंज आता है, वी विल गो इनटू दैट स्पेसिफिक पार्ट, फिर हम लोग बात करते हैं। बताइए, what happens when we increase the atomic number, what happens to the proton number, प्रोटॉन नंबर क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, अरे ये तो बहुत आसान चीज है ना। बताइए, एटॉमिक नंबर बढ़ने से प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन नंबर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, हाँ गाइस, नो आइडिया। अरे यार, 12वीं कक्षा में आके प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर में बता नहीं पा रहे, तो बहुत खराब बात है। व्हाट हैपेंस टू द प्रोटॉन्स व्हेन द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस, नो आइडिया। अरे कोई तो आंसर कर दो भाई जल्दी से, टेल मी इन द चैट, इंक्रीजेस डिक्रीजेस ये बता दीजिए कम से कम। स्कैंडियम 21 में ज्यादा, 21 एटॉमिक नंबर में ज्यादा प्रोटॉन है या 22 में? Okay, there are two answers only. I have Rachit, I have Aliza, I have Deborah. They have not answered. Safia has not answered. Jaldi bhai jaldi. Safia, Deborah and Aliza, what will happen to the protons? If you don't know, please write don't know. If you don't know, please write don't know. When the atomic number increases, then the protons, Aliza, Deborah and Safia. Am I not audible to you guys? Jaldi answer kare. Aliza, Deborah and Safia. अच्छा, सीम्स लाइक यू गाइस आर नॉट इन द क्लास, इतना चीखने के बाद नहीं आंसर आ रहा तब तो फिर नहीं है क्लास में, ठीक है। सो प्रोटॉन नंबर्स इट इंक्रीजेस, प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज इज इंक्रीजिंग। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रॉन्स, व्हेन वी इंक्रीज द एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन को क्या होगा, इट विल इंक्रीज, डिक्रीज और रिमेन सेम, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करने से। इन द चैट प्लीज, इलेक्ट्रॉन्स क्या होगा, अरे जल्दी भाई जल्दी, इंक्रीज करेगा, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन्स जिसमें नेगेटिव चार्ज होता है, इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, ठीक है, एंड वी आर इंक्रीजिंग इन द सेम शेल। तो आप देखते हैं जरा, ये 3D है, ठीक है, हियर वी हैव द न्यूक्लियस, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास नेगेटिव चार्ज है, दिस इज द 3D सीरीज, ठीक है। फर्स्ट केस, केस ए, डिस्टेंस सेम है यहाँ पे, डी सेम, पहला केस है आपके पास 21 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे आपके पास मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन, देन वी हैव 22 और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, 23 प्रोटॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 24 4 इलेक्ट्रॉन, 25 5 इलेक्ट्रॉन। चलिए अब यहां से यहां तक अब बताइए, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, ये आपके पास नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, दिस इज द नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। What will happen to the force of positive and force between positive and negative charge? It will increase or decrease? हाँ guys, Increase. रजिता इन द चैट प्लीज। इंक्रीज डिक्रीज बहुत सिमिलर वर्ड हो जाते हैं ना, तो हम समझने में हमको मुश्किल हो जाती है सुनने में, इंक्रीज कर रहे हैं या डिक्रीज कर रहे हैं। आई नीड रीजन ऑल्सो, ठीक है ना। यूसुफ हैज आंसर्ड, व्हाट अबाउट अदर्स? ओके, यूसुफ कैन यू एक्सप्लेन योरसेल्फ? यू कैन इजीली यूज फिजिक्स इन ऑर्डर टू आंसर दिस क्वेश्चन। फिजिक्स में कूलम्स लॉ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, व्हाट इज द कूलम्स लॉ, के Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर, करेक्ट है। Yes, sir. तो सी व्हाट इज हैपनिंग, सी डी इज तो सेम, तो डी तो मैटर नहीं करेगा, के इज ऑल्सो कांस्टेंट, के भी मैटर नहीं करने वाला है, व्हाट इज गोइंग टू मैटर, Q1 इंटू Q2 ना। व्हाट डू यू थिंक, Q1 एंड Q2 इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ऊपर से नीचे? Increasing. इंक्रीजिंग, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल ऑल्सो Increase. मेक सेंस। Yes, sir.
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोग को। व्हेन वी आर अच्छा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज कर रहा है, प्लीज रिमेंबर में, है ना, अभी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बात हुई। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जब इंक्रीज कर रहा है, व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज इंक्रीजिंग, देन व्हाट कैन यू टेल अबाउट द साइज ऑफ द एटम? मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल कम नियरर टू ईच अदर, एंड व्हेन दे आर कमिंग नियरर टू ईच अदर देन द साइज विल श्रिंक। अब ये हमने एक्सप्लेन कर दिया, ये याद रखने की जरूरत नहीं है आपको सारी चीजें। साइज श्रिंक होगा, ये समझ में आएगा नहीं, थोड़ा सा जल्दीबाजी कर गए लास्ट में। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीजेस, दैट मींस पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होगा, डिस्टेंस कम हो जाएगा, राइट? व्हेन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज ग्रेटर देन द इलेक्ट्रॉन्स और द व्हाट वी कैन से द साइज विल श्रिंक। मेक सेंस, यस और नो? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो। Yes, sir. रजिता, अदर्स टेल मी, अलीजा, ये लोग तो पता नहीं है कि नहीं, Yes, अलीजा, sir. यू गाइस आर नॉट इवन आंसरिंग। सफिया, आर यू देयर? Yes, sir. फिर आप कुछ बोल ही नहीं रहे, जब हम इतना पूछ रहे थे एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो प्रोटॉन इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, यू वर जस्ट साइलेंट। हाँ सफिया? यस सफिया, टेल मी व्हाई वर यू साइलेंट देन? इतने ये छोटे से सवाल में आप लोग अगर नहीं मेरी मदद कर रहे हैं यहाँ पे, यू नॉट आंसरिंग, देन फिर क्या फायदा? ना इन एटॉमिक रेडियस जनरली क्या होता है, जनरली व्हाट शुड हैपन? फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक साइज डिक्रीजेस इन अ पीरियड। ठीक है, एक पीरियड की बात कर रहे हैं जरा। इन अ पीरियड एज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, है ना, प्रोटॉन का नंबर बढ़ता है, मेनली वही कारण है। जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, प्रोटॉन का चार्ज बढ़ेगा, देन प्रोटॉन कैन अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स मोर इफेक्टिवली, और वो साइज को छोटा कर देगा, लेफ्ट राइट। देयरफॉर व्हाट हैपेंस, देयरफॉर व्हाट हैपेंस, यहाँ पे आपके पास द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एक सेकेंड, एटॉमिक साइज की अगर हम बात करें, देन द एटॉमिक साइज ऑफ एस का सबसे कम होता है, उसके बाद बी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड उसके बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स। उल्टा लिख दिया हमने, माय बैड। सबसे बड़ा एस ब्लॉक एलिमेंट्स, देन वी हैव डी ब्लॉक एलिमेंट्स, एंड देन वी हैव पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, आई होप यहां तक आप लोगों को समझ में आया। अब यहाँ पे तो वी हैव जस्ट कंपेयर्ड बिटवीन द एस ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट? एस और पी के इंटरमीडिएट में होता है, बीच में होता है। नाउ लेट अस लुक एट द डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक रेडियस। व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एटॉमिक रेडियस, तो हम लोग को दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक तो सीरीज में, दैट मींस व्हेन यू आर इन द 3D सीरीज, देन व्हाट इज द वेरिएशन, एंड व्हेन यू गो फ्रॉम 3D टू 4D, एंड व्हेन यू गो फ्रॉम 4D टू 5D, देन व्हाट इज द वेरिएशन। ठीक है, दोनों चीजें हम लोग को समझनी पड़ेगी। नाउ व्हेन इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द 3D सीरीज एलिमेंट, तो वहां पे क्या करना है, यू सी, जस्ट गिव मी अ सेकंड, डेटा अगर होगा देन आई विल पुट अप द डेटा। ऐसे लिख लीजिए आप, राइट इट लाइक दिस। In transition series, that is 3D, 4D and 5D, ठीक है, सारे में जनरलाइज्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियली साइज डिक्रीजेस एज इट शुड, है ना, एज इट शुड, साइज डिक्रीजेस एज एटॉमिक नंबर, एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। कहां से कहां तक? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम,
and manganese. ठीक है. Now the reason is, you will write the reason. What is the reason? The reason is Z effective increases as the atomic number increases and shielding of D subshell is poor. ठीक है. अच्छा, एक इफेक्ट तो हमने बता दिया था आप लोग को कि Z इफेक्टिव के बढ़ने से क्या होगा. When you are going to increase the number of electrons, Z इफेक्टिव के बढ़ने से आपके पास साइज छोटा होगा. एक उसका उल्टा इफेक्ट भी हो रहा होता है. उल्टा इफेक्ट क्या है आपके पास? सी, ये पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे आपके पास है ओनली वन इलेक्ट्रॉन. Then all the positive charge are focused on this one electron and it is able to attract it. तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अगर एक इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है, दैट मींस इट कैन अट्रैक्ट वेरी इजीली. सेकंड में क्या है आपके पास? व्हेन यू हैव पॉजिटिव चार्ज एंड देन यू हैव डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स. नाउ व्हाट वुड हैपन इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस वन इलेक्ट्रॉन. एक इलेक्ट्रॉन को अगर हम अलग कर लें, दिस इलेक्ट्रॉन, देन द अदर रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस. ठीक है. अब न्यूक्लियस पे चार्ज उतना ही है बट वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. देन व्हाट हैपेंस हियर? वी कॉल इट इज शील्डिंग इफेक्ट. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अदर इलेक्ट्रॉन, this one electron is not feeling the attractive forces of nucleus as it should. That is why there is a decrease in the effect. There is a decrease in the nuclear charge. इसी वजह से उसको effective nuclear charge बोलते हैं. तो shielding होती है. Shielding happens why? Because there the number of electron increases in a shell. When you have a shell and only one electron, उसमें attractive force बहुत ज्यादा अच्छा से होगा. ठीक है. But as the number of electrons increases, वहां पे attraction क्या होने लगता है? कम भी होने लगता है. Attraction एक तो बढ़ रहा है when you are increasing the atomic number, but there is also a slight decrease in the attraction because of the shielding effect. तो दोनों चीजें हो रही हैं. Z effective बढ़ रहा है और shielding होने की वजह से थोड़ा सा कम भी हो जा रहा है. ठीक है. But initially since the number of electrons are less, स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक, then वो effect उतना ज्यादा वहां पे dominant नहीं है. The Z effective one is dominant. Secondly, midway में क्या होता है? जो आपके पास एक तो अट्रैक्टिव फोर्सेस है एंड शील्डिंग इफेक्ट, दे बोथ बिकम ऑलमोस्ट इक्वल. सो यू राइट मिडवे. Midway what will happen? Midway the size remains same as atomic number increases. Now the elements that we have to keep here is, we have manganese, it is approximately equal to iron Fe co nickel. ठीक है. यहां तक these are almost same. Now what happens here? As the atomic number increases, the shielding effect of d electrons increases and cancels the effect of increased Z effective. C में क्या होगा? At the end, size will start to increase. Size increases as atomic number increases. Now the elements जिसमें size increase करता है, it is from nickel, which is having smaller size than copper, and then largest is for zinc. There are two reasons for this. एक तो आपके पास the shielding effect वो dominant हो जाता है, and also there is pairing of electrons which takes place in the d subshell, and that pairing of electrons, it leads to repulsion and therefore increase in the size. So you'll write next as the number, actually the number of electrons, as the atomic number increases, shielding effect dominates the increase in
Z effective and pairing of d electrons leads to repulsion and increase in साइंस। तो ये हो गया हर एक सीरीज के बारे में इन द 3D सीरीज। ठीक है, अब नेक्स्ट आप लोग को देखना है 3D वर्सेस 4D। व्हाट विल हैपन इन 3D वर्सेस 4D? You'll write size of 4D elements is greater than 3D elements। ठीक है, the reason is size increases down the group, size increases down the group as Z effective increases and electrons enter, electron enters new shell। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दिस वन, इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग न्यू शेल, है ना। जैसे 4D है, तो 4D में ये कौन से शेल में एंटर कर रहे हैं? इज एंटरिंग इन द फोर्थ शेल। और 3D में कहाँ एंटर कर रहे हैं? 3D में दे आर एंटरिंग द थर्ड शेल। ऑब्वियसली द थर्ड शेल विल बी नियरर देन द फोर्थ शेल। ठीक है, दैट इज द रीजन। यहाँ पे क्या हो रहा है? दे आर एंटरिंग व्हाट? एंटरिंग अ न्यू शेल, दैट इज व्हाई देयर इज अ इंक्रीज इन द साइज। बट अ वेरी opposite effect is seen when we compare 5D and 4D metals. This you will write size of 5D elements is almost similar to that of 4D elements. Now, why is this? Please see. Size of 5D and 4D are very similar. It is because you will write here due to lanthanoid contraction. Okay, now this word should be there when you are writing the answer in the board examination, due to lanthanoid contraction. Now, what is lanthanoid contraction? ध्यान से सुनिएगा। When you see the 5D series element ना, 5D series element में general electronic configuration हम लोगों ने क्या लिखा था? There is an involvement of 4f14 electrons. So there are 14 electrons in the 4f subshell. The 4f subshell, it has very less shielding effect. ध्यान दीजिएगा, 4f में आपके पास देखिए 14 electrons है। There are 14 more electrons in the 5D series. 14 electrons अगर ज्यादा है तो आपके पास क्या होंगे? 14 protons भी ज्यादा होंगे। ठीक है, essentially what should happen? The increase in this proton number should be approximately cancelled by the increase in the electrons and the shielding effect. But because the F subshell, it is not very good in shielding, it has poor shielding. The F subshell electrons, they cannot shield the outer subshell electrons. इस वजह से if they are not shielding, तो आपके पास जो पॉजिटिव चार्ज का इन्फ्लुएंस है आउटर वाले शेल में क्या होता है? बहुत अच्छे से चला जाता है। दीज आर इफेक्टिवली अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस। व्हाई? बिकॉज जो अंदर के एफ सबशेल है, दे आर नॉट शील्डिंग इट प्रॉपरली। ठीक है, एंड दैट इज known as lanthanide। उसी का कॉन्सिक्वेंस है lanthanide contraction। The cause of lanthanide contraction is what? It is the poor shielding of, you will write, which is due to the poor shielding of 4f electrons of 4f electrons in 5D series elements। ठीक है, now this is regarding atomic radius and ionic radius। If you want to look at the data, then here is the data.
As you can see, the green line is for the 3D series element. Okay, this green line. Then the blue dotted line is for the 4D series element, and the red dotted line is for 5D series element. You can see that there is a very less difference between 4D and 5D. They are approximately what? Almost similar. And when we talk about in a series, you can see that as we initially what is happening, the size is decreasing. Okay, and then it almost becomes what? Constant. यहाँ से यहाँ तक it is almost constant. Then it starts increasing. ठीक है, वही हमने देखा था that when we go start and we reach manganese, फिर उसके बाद manganese, Fe, cobalt, nickel is almost same. The nickel से लेके फिर copper तक it is going to increase. Okay, so these were the trends and we have explained it also. Now we are done with the atomic radii and the ionic radii. अच्छा, ionic radii में ना एक चीज आप लिख सकते हैं यहाँ पे. In the case of ionic radii, what will be the? You will write like this. Ionic radii decreases with increase in ionic radii decreases with increase in oxidation state. ठीक है, अगर हम जनरली बात करें, m अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में तो बहुत छोटा है, m अगर +2 में तो थोड़ा बड़ा है, m अगर +1 में तो और बड़ा है, और इससे ज्यादा बड़ा कौन सा होगा? न्यूट्रल मेटल एटम. ठीक है, जनरली स्पीकिंग m3 पॉजिटिव से अगर स्टार्ट करें तो. राइट, दिस इज रिगार्डिंग आयनिक रेडियई एंड एटॉमिक रेडियई. अब इसी से रिलेटेड है आपके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी. ठीक है, रिलेटेड टर्म इज व्हाट? एटॉमिक रेडियई से रिलेटेड क्या है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी. Now, what is ionization enthalpy? Energy required. Energy required to remove electron from outermost shell. From outermost shell. ठीक है, तो इसकी एक चीज याद रखिएगा. In 3D series, electron is removed from 3D नहीं, from 4s. ठीक है, from 4s2. 4s2 होता है ना, 4s2 से पहले इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसके बाद 3D से निकलेगा. ठीक है, 4s2 फर्स्ट, देन 3D, उसके बाद 3D आएगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है? सोनो प्लीज टेल मी गाइस. ठीक है, नाउ Yes, sir. when we talk about ionization enthalpy, the ionization enthalpy के बारे में, similar the trend for ionization enthalpy, it is that when you go from left to right, the ionization enthalpy it increases gradually. ठीक है, it is happening because एक तो सबसे पहला रीजन आपके पास देखिए, generally speaking, what is happening if you go from left to right in a series, there is a decrease in the atomic radii. और जैसे जैसे atomic radius कम होता जाएगा, for example, if I compare these two, ठीक है, you have electron here and you have electron here. So positive और negative charge जितना नजदीक होगा, then the force of attraction is greater. यहाँ से remove करना क्या हो जाएगा? It will be difficult. That is why as the atomic radii is decreasing, it is getting more and more difficult to remove the electrons. Now atomic radius भी घट रहा होता है and the effective nuclear charge is also increasing. Both of the reasons they lead to the general rule, the ionization enthalpy, you will write here in TS, transition series, delta H ionization. ठीक है guys, there is a huge speakers and all blowing in my surrounding. Are you able to hear that or you are not able to hear that? Tell me guys. We No, sir. can't. You can't ना? ठीक है. The delta Hi in transition series, ionization enthalpy increases with increase in atomic number. ठीक है, now why it is happening? Due to the increase in effective nuclear charge. ठीक है, सबसे पहले क्या हो रहा है? Effective nuclear charge, it is increasing.
एंड जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे, डी इलेक्ट्रॉन्स पे इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, एंड शील्डिंग डी इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है, पुअर होती है, ठीक है, एंड इंक्रीज इन जेड इफेक्टिव एंड पुअर शील्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। देखिए इन जनरल तो हम लोगों ने देख लिया, अब हम लोग देखते हैं डेटा, ठीक है। डेटा हम लोग जब देखने के लिए जाएंगे, जस्ट गिव मी अ सेकंड। This is the ionization enthalpy, ठीक है। Now you can see that there is no good, what I can say, कोई खास अच्छा ट्रेंड नहीं है यहाँ पे। There is a lot of ups and downs. Can you see that? Yes or no, please tell me guys. Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Now what can be the reason for this? The variations that you can see है ना, variations कहाँ कहाँ पे आ रहा है उसको हम लोग फोकस करते हैं, ठीक है। Variations कहाँ कहाँ पे आ रहा है, see here. सबसे पहले तो इनको देखते हैं। These are exceptionally high. If you just compare ना, अगर आप कॉपर का देखें और जिंक का देखें, इतना इंक्रीज तो नहीं होना चाहिए था। मेक सेंस? यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। कॉपर से जिंक तक इतना Yes, इंक्रीज sir. नहीं होना चाहिए था, करेक्ट। नाउ दीज थ्री ना, सबसे बड़ी चीज, ऐसे लिखिए इसको, Zn, Cd and Hg हैव वेरी हाई, कर लेते हैं एक्सेप्शनली वगैरह हटाओ, वेरी हाई डेल्टा H आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाई? ड्यू टू वेरी स्टेबल fully filled D10 configuration। बात समझ में आ रही है? Because they have D10 configuration, तो बहुत स्टेबल है। If you are going to remove one electron also, it will become very unstable. So zinc, Cd, and He, they resist that change, and that is why their ionization enthalpy is very large. That means you have to give a large amount of energy in order to remove one electron from the zinc, Zn, Cd, and Hg. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें, आपके पास है आयनाइजेशन एंथैल्पी। हाँ, मैग्नीज का आप देखिए, you can compare it from here. Chromium and manganese, there is a large increase. Yes or no? Please tell me. Correct है? Yes, sir. Right. Now, this large increase, why it is present? You are right. Has very high delta H ionization enthalpy due to very stable D5 configuration. And also one more thing. इस पे इतना ही लिखने देंगे, यहीं तक। Do very stable D5 configuration. Just give me 1 second. आप लोग एक बार confirm one property, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? 108 atomic size, anionic size, ionization enthalpy.
No. Next thing is, ये तो ionization enthalpy होगी. Regarding, there is certain exceptions that has been seen for the second ionization enthalpy. ठीक है, फर्स्ट ionization enthalpy नहीं, second ionization enthalpy. एक और चीज आपसे ना ये पूछा जा सकता है कि क्रोमियम का आप अगर कंपेयर करें, क्रोमियम एंड कॉपर, chromium and copper, they have exceptionally low, you can say, they have exceptionally low ionization enthalpy. क्रोमियम का मैग्नीज से कंपेयर कीजिए, क्रोमियम का जिंक से कंपेयर कीजिए. ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्शनली लो होता है. नाउ दीज आर एक्सेप्शनली लो, व्हाई? बिकॉज ऑफ D10 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, D5 एंड D10, एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो D5 D10 कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा. नाउ इससे इतना ज्यादा सवाल नहीं आता है. एक सवाल ये आता है अबाउट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. यू राइट अनदर पॉइंट, chromium and copper has very high second delta Hi. That means second ionization enthalpy बहुत ज्यादा होती है. अगर हम क्रोमियम की बात करें, क्रोमियम which is in 4s1 3d5, आप इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाल दें क्रोमियम पॉजिटिव, देन इट इज व्हाट? 4s0 3d5. प्लीज रिमेंबर, यू हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फर्स्ट फ्रॉम दी 4s. अब अगर आप क्रोमियम 2 पॉजिटिव करेंगे, देन इट इज गोइंग टू बी 4s0 and 3d4. Now the second ionization enthalpy will be very high because this is what? This is unstable. Because here we are having D4 configuration. Similar thing happens when you have copper. Copper, it is what? 4s1 3d10. Copper positive is going to be 4s0 3d10. It is still what? It is still fully filled. Then copper 2 positive, it is going to be what? 4s0 3d9. This will become unstable because of 3d9. Okay, I hope this makes sense. Now, this is the observation that we have seen. The reason you have understood, and how are you going to write this? You will write here. This is due to more stable. This is due to more stable 3d5 and 3d10 configuration in chromium and copper. ठीक है, आगे आपको लिखना तो आप लिख सकते हैं रिमूवल ऑफ second electron disrupts this stability. Disrupts this stability. ठीक है, यहाँ पे आप लोग एक काम कीजिए. Here you will due to very stable fully filled, D10 नहीं लिख के आप लोग ऐसा लिखिएगा S2 D10 कॉन्फ़िगरेशन. ठीक है, S2 D10 कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज यहाँ पे S2 भी होता है. ठीक है. Now, general, you can write something regarding third ionization state. The उससे पहले एक काम ये लिख दीजिए, the second ionization enthalpy of
can write Zn is relatively low as it results in (3d10) configuration. 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो 4s2 सारे निकल गए, 3d10 मिल गया आपको. ठीक है. Another point regarding third ionization enthalpy is the third ionization enthalpy of Fe is relatively low as it results in 3d5 configuration. ठीक है. You can see it how you have Fe, which is what, 4s2 3d6. You remove one electron. आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए. ठीक है ना. Fe2 positive. Fe2 positive is 4s0 3d6. Now you can remove one electron from the Fe, so become Fe3 positive, which is 4s is still 0 and we have 3d5. ठीक है. So relatively if you see ना कि मैग्नीज वगैरह से बात करें, मैग्नीज से भी कम होता है इसका इनफैक्ट, है ना. So therefore ionization enthalpy, that is the third ionization enthalpy of Fe, it is lower than the third ionization enthalpy of manganese. चलिए. These things are regarding what the ionization enthalpy. ठीक है. नेक्स्ट है आपके पास the electrode potential. Next we have is the electrode potential. Electrode potential. ठीक है. The E naught values. So E naught values we have to look at two different E naught values. We have to see the E naught metal 2 positive से metal और E naught of metal 3 positive से metal. ठीक है. So these are the two standard reduction potential we have to see. तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं talking about metal 2 positive eats 2 electron and gives metal. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. तो ये metal 3 positive से metal नहीं, metal 3 positive से metal 2 positive. ठीक है. So metal 3 positive, it would eat 1 electron and it will form metal 2 positive. ठीक है. Now these are the two things that we have to talk about. We'll first of all talk about the E naught M 2 positive से metal. Fine. Now यहाँ पे सबसे पहले आप समझ लीजिए कि E naught वगैरह ये सारी चीजें बता क्या रहा होता है. ठीक है. जनरली स्पीकिंग मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लूज करने की या गेन करने की. What is the tendency of metal to lose electron or to gain electron? 10th में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने. ऐसे रिपीट करके देखिए दिमाग में. मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू डैश इलेक्ट्रॉन. क्या वर्ड आ रहा है? मेटल्स हैव अ टेंडेंसी टू, बोलो भाई. फादिल. Sir, lose electron.
लूज इलेक्ट्रॉन। रजिता, आपका क्या ख्याल है? I said gain. यू सेड गेन। और किसी को कुछ Yes. याद नहीं आ रहा? सोडियम। सोचो, ऐसे सोडियम सोचो, है ना, मेटल, बहुत बढ़िया मेटल सोडियम। ठीक है, तो सोडियम कैसे मिलेगा आपको? पॉजिटिव में मिलता है, नेगेटिव में मिलता है जनरली? क्या ख्याल है गाइस? रजिता? Lose electron. हाँ, सोडियम कैसे मिलता है रजिता? So it's a negative, sir. Pos नेगेटिव? नहीं नहीं, नेगेटिव positive positive. because it loses electron. इलेक्ट्रॉन ना। बात समझ में आई रचिता? हाँ ये सुनो, याद। Yes, sir. Yes. इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, नेगेटिव चीज लूज कर रहा है, तो उस पर पॉजिटिव का चार्ज आ जाएगा। ठीक है, मेटल की Yes. जनरल टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन लूज करने की। बट अब देखिए, थोड़ा सा ना यहाँ पे आप लोग ना, हर जगह थोड़ा सा आपको ना वैसे मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन कंफ्यूजन रहेगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में। ठीक है, तो वो कंफ्यूजन क्यों रहेगा हमेशा, वो हम आपको अभी बता दे रहे हैं। ठीक है, आप लोग उस कंफ्यूजन पे जाइएगा ही मत, एज इट इज चीजों को याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, जब भी आपका माइंड थोड़ा सा गड़बड़ा है ना, आप प्लीज उसको इग्नोर करने की कोशिश कीजिएगा। होता ये है कि आपको ई नॉट दिया हुआ है, ई नॉट की वैल्यू रहेगी पॉजिटिव, नेगेटिव, मोर पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड, लेस पॉजिटिव देन एक्सपेक्टेड, मोर नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, लेस नेगेटिव देन एक्सपेक्टेड, ऐसी चीजें रहेंगी, है ना। और सवाल हमेशा आपको इवन इन द टेक्स्ट बुक ऑल्सो वो ऐसे ही लिखा रहेगा रिगार्डिंग द ई नॉट। और ई नॉट में अगर आप देखें तो क्या हो रहा है बताइए तो, दिस इज टेल मी व्हाट व्हाट इज हैपनिंग। ये मेटल क्या कर रहा है? टू पॉजिटिव, इट इज ईटिंग इलेक्ट्रॉन, और ये मेटल बना रहा है। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट एक्चुअली व्हाट हैपेंस, या फिर एक्सप्लेनेशन जो है ना इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए नहीं होती है। आपके पास हमेशा जो एक्सप्लेनेशन होगा वो इस रिएक्शन के लिए होगा। मेटल फॉर्म्स मेटल टू पॉजिटिव, और दो इलेक्ट्रॉन ये लूज कर रहा है। ठीक है, since all the data is available for reduction potential, and we have seen in electrochemistry also, there is a reason why we take reduction potential, because अगर हम M2 पॉजिटिव बोल रहे हैं तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल के लिए हमको रिएक्शन में बताना नहीं पड़ेगा ये दैट यू आर गोइंग टू द मेटल ओनली, डायरेक्टली मेटल, है ना। रिड्यूस होकर कहां बन जाएगा? मेटल बन जाएगा। वो दो आर दी अदर थिंग्स, वो छोड़ दीजिए उनको, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात है। बट यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि आपको सवाल पूछा जाएगा अबाउट रिडक्शन पोटेंशियल, और आंसर में आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से समझाया गया रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, याद रहेगी ये चीज। यस और नो प्लीज टेल मी। आपको देखिए हम क्या कह रहे हैं, कंफ्यूजन होगी बिकॉज द क्वेश्चंस आर आस्क्ड रिगार्डिंग रिडक्शन पोटेंशियल। उस आई मीन दिमाग में रिडक्शन पोटेंशियल रख के लोगों ने सवाल किया है, और आंसर्स एक्सप्लेनेशंस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के कंटेक्स्ट में है। इवन दो दोनों से रिजल्ट सेम निकलने वाला है, बट बिकॉज देयर इज अ कंटेक्चुअल डिफरेंस, इसकी वजह से दिक्कत आ सकती है। ठीक है, डेबोरा, रचिता, सफिया एंड फादिल, गॉट इट? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस। yes sir. ठीक है, Yes, sir. इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, जब भी कंफ्यूजन आए ना तो आप उसको समझ जाइएगा कि वो कैसे क्यों हो रहा है, बिकॉज सवाल कर किया जा रहा है रिडक्शन पोटेंशियल के हिसाब से, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि हम लोग इसी प्रोसेस को देखेंगे। ठीक है, ये आपके पास है, ये आता कैसे है? ठीक है, सो वी हैव मेटल विच इन सॉलिड स्टेट। आप इसको क्या बनाना है? मेटल टू पॉजिटिव, दो इलेक्ट्रॉन निकालना है, राइट? You have to remove two electrons from the metal, and also this will be in aqueous state. ठीक है, ये रिएक्शन वगैरह की बातें होती हैं तो इसको हम लोग कहां पे करते हैं? पानी में करते हैं, इन aqueous state. Now whatever energy is related to this particular change is represented by E naught in the terms of volts. ये चीज हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सीखी थी। Now in order to calculate this, the things that we use is data. यहां से यहां तक आपको चेंज करना है, तो मेटल से पहले हम क्या बना लेंगे? मेटल से हम पहले मेटल गैस बनाएंगे। मेटल गैस से हम फिर सेकेंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी निकाल के मेटल गैस का हम क्या करेंगे? M2 पॉजिटिव बना देंगे। M2 पॉजिटिव जब गैस स्टेट में आ गया, इसको पानी में डाल के हम यहां से डेल्टा H हाइड्रेशन की मदद लेंगे। सॉलिड से गैस जा रहे हैं तो देयर आर फ्यू टर्म्स दैट यू कैन यूज। डेल्टा H सब्लिमेशन बोल सकते हैं आप इसको, और यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज डेल्टा H एटोमाइजेशन। एक ही चीज है, सॉलिड से गैस बनाना ना। ये क्या हो रहा है सर? देखिए, वी आर गोइंग फ्रॉम मेटल सॉलिड टू मेटल एक्वस। इन सारे ये मेटल ना गैस बनता है कभी, ना मेटल टू पॉजिटिव बनता है कभी, ना मेटल टू पॉजिटिव, ऐसा नहीं होता है। वी आर नॉट, ये ऐसे स्टेप्स हम नहीं बता रहे हैं।
This is the data that we are using in order to calculate the change that is happening from metal solid to metal aqueous. यानी कि अगर आपको कैलकुलेट करना है, सी देयर इज अ वेरी इजी वे ऑफ गेटिंग डेटा. या तो आप उसको मेजर कीजिए तो डिवाइस चाहिए, और व्हाट एल्स यू कैन डू, यू कैन कैलकुलेट, तो उसके लिए फॉर्मूला चाहिए. ठीक है. सो वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी डिवाइस, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूजिंग द ऑलरेडी अवेलेबल डेटा इन, मतलब आपके पास इवन एनसीईआरटी में भी एंथैल्पी, आयनाइजेशन, सॉरी सब्लिमेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी के डेटा रहते हैं. So using those data, we can calculate what is the standard electrode potential. Now, the standard electrode potential, it depends on what things? It depends on the atomization, enthalpy of atomization, ionization enthalpy, and the hydration enthalpy. तीन चीजों का combination. Now, if you look at the atomization energy, enthalpy of atomization, तो आप ये बताइए, ये जो प्रोसेस होगा एंडोथर्मिक होगा, एक्सोथर्मिक होगा? क्या ख्याल है? एनर्जी देनी पड़ेगी तब सॉलिड से गैस बनेगा, या अपने आप बन जाएगा और फिर एनर्जी भी देगा? What will happen? Tell me, guys. Will we have to give energy to convert solid to gas? Give energy. Give energy. So this is endothermic. Endothermic, थोड़ा इसको हम ना ऐसे आम भाषा में बोलते हैं बैड, मतलब आसान नहीं होगा ना, नॉट इजी थिंग. बैड बोलते चलेगा? यस और नो प्लीज टेल मी. अरे हाँ है ना, Yes, कुछ तो sir. बोलो. ठीक है, चलेगा ना. आयोनाइजेशन एंथैल्पी, व्हाट इज हैपनिंग? वी आर रिमूविंग इलेक्ट्रॉन. मेटल है, metal inside it has nucleus, it has positive charge, and the atom also has electron. Those electrons are attracted by the nucleus, और उस attraction को तोड़ के we have to remove electron. Now tell me, this is going to be endothermic or exothermic? Ionization enthalpy, क्या ख्याल है? बताइए. इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, या खुद ब खुद निकल जाएगा और एनर्जी भी देगा? Sir, endothermic, right? एंडोथर्मिक. वेरी गुड. हम जस्ट पूछ रहे हैं, ठीक है. हमने Yes, सांस, sir. ताकि आप लोग बस इंगेज रहिए यहाँ पे. एंडो तो ये भी बैड है ना, एनर्जी देनी पड़ रही है. नाउ हाइड्रेशन आप लोगों के लिए शायद नया हो, नया तो नहीं लेकिन याद नहीं होगा. हाइड्रेशन में क्या होता है? व्हेन यू हैव सम पॉजिटिव चार्ज ना, इस तरह से मेटल टू पॉजिटिव है ना, तो मेटल टू पॉजिटिव है, यू आर एडिंग वाटर. नाउ वाटर, इट हैज H2O. H2O इज समथिंग लाइक दिस. और H2O क्या करता है? सराउंड कर लेता है. ऑक्सीजन ही क्यों सराउंड कर रहा है? बिकॉज ऑक्सीजन इज हैविंग डेल्टा नेगेटिव बिकॉज ऑफ इट्स लोन पेयर आल्सो, है ना. नाउ दिस ऑक्सीजन इज मेकिंग सम अट्रैक्टिव फोर्सेस विद द पॉजिटिवली चार्ज आयन. ऑक्सीजन और पॉजिटिव के चार्ज के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन होता है. अट्रैक्शन इज ऑलवेज गुड. जैसे रिपल्शन बैड, तो ऑक्सीडेशन अट्रैक्शन हमेशा क्या होता है? इट इज गुड. इट इज एंडोथर्मिक, सॉरी इट इज एक्सोथर्मिक. अट्रैक्शन हमेशा क्या होता है? इट इज एक्सोथर्मिक. ठीक है, दिस इज एक्सो एंड दिस इज गुड. यानी कि हाइड्रेशन एंथैल्पी जितना ज्यादा अच्छा होगा, उतनी आसानी से, देखिए दो चीजों में तो आपको एनर्जी देनी पड़ रही है, सॉलिड से गैस बनाने में, और आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी क्या करनी पड़ी है? एनर्जी आपको देनी पड़ रही है. हाइड्रेशन एंथैल्पी इज द ओनली पार्ट वेरी व्हाट इज हैपनिंग, इट इज एक्सोथर्मिक. तो जितना अच्छा हाइड्रेशन एंथैल्पी होगा, उतनी आसानी से मेटल कहां जाएगा? टू पॉजिटिव स्टेट में जाएगा. मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी गाइस. Yes, sir. ठीक है. एंड इफ मेटल इज गोइंग फ्रॉम टू, मेटल अपने सॉलिड स्टेट से टू पॉजिटिव में जा रहा है, एंड ये अपने आप ही जाएगा जनरली स्पीकिंग. व्हाई? बिकॉज मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. Now, if it is automatically going from metal to positive, तो ये आपको इलेक्ट्रिसिटी देगा. एंड जनरली स्पीकिंग दैट इज व्हाई व्हाट विल हैपन, दिस प्रोसेस दैट इज ये ऑक्सीडेशन जो हो रहा है ना, SOP इज व्हाट जनरली पॉजिटिव. तो इसकी वजह से SOP अगर पॉजिटिव है, देन यू कैन राइट SRP और E नॉट. E नॉट हमेशा SRP होता है. मेटल टू पॉजिटिव, सेम मेटल इज generally negative. Make sense? Yes or no? Please tell me, guys. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes. ठीक है, अब समझिए. अब मान लीजिए किसी का SOP जो है ना, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, मेटल से मेटल टू पॉजिटिव वाला, इट इज नॉट पॉजिटिव, वो नेगेटिव हो जा रहा है. उसके लिए SRP क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी. अच्छा, अगर SOP स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर वो नेगेटिव हो जा रहा है, इसका मतलब क्या है? ये देखिए, इन दोनों की वजह से तो नहीं हो रहा होगा, एंडोथर्मिक तो बैड है ही पहले से ही. किसी का हाइड्रेशन एंथैल्पी अच्छा नहीं होगा, तभी जाके मेटल से मेटल टू पॉजिटिव आराम से नहीं बन पाएगा ना. ये जो गुड वाला पार्ट है, ये अगर एग्जिस्ट ना करे, देन मेटल टू पॉजिटिव इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट. मेक सेंस? क्या ख्याल है? Yes, sir. ठीक है, समझ में आ रही है बात? ये थोड़ा सा मिक्सचर हो गया. डेबोरा, रजिता, सफियान, फादिल, थोड़ा सा बताइए.
इसमें खलत मलत हो सकती हैं चीजें। टेल मी गाइस। डेबोरा, आर यू स्टिल विथ मी? Yes, sir. यस, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा मेटल है जिसका SRP इज व्हाट? पॉजिटिव। E नॉट कॉपर टू पॉजिटिव से कॉपर इज पॉजिटिव बिकॉज delta H hydration of copper 2 plus is not able to balance the high delta H sublimation and IE1 and IE2 कॉमा देख लिखते हैं। मेक सेंस? ऐसा प्लीज टेल मी। Yes, अगर sir. हाइड्रेशन एंथैल्पी अच्छा होता है तो मेटल से मेटल टू पॉजिटिव आराम से बनता है, तब स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। व्हेन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव, SRP नेगेटिव होता है। In case of copper, we saw that the E naught, the standard reduction potential is positive, यानी कि SOP negative। SOP negative हो रहा है यानी कि मेटल से मेटल टू पॉजिटिव आराम से नहीं बन रहा है। मेटल से मेटल टू पॉजिटिव आराम से नहीं बन रहा है बिकॉज हाइड्रेशन एंथैल्पी इज व्हाट? It is low. It is not able to balance the bad part. The good is not able to balance the bad part. Make sense? या प्लीज याद रहेगा? क्या ख्याल है? Yes, sir. ठीक है। अनदर थिंग इज दैट, ये तो सबसे पहले इससे सब बहुत सवाल आता है ना, कॉपर वाला सवाल आएगा तो हाइड्रेशन एंथैल्पी चिपकाइएगा। अनदर थिंग इज there is no regular trend in the E naught। E naught किसका? टू पॉजिटिव से टू पॉजिटिव से जीरो इन द E naught, as there is irregular variation irregular variation irregular variation in delta H ionization and ionization enthalpy का IE, ionization enthalpy and sublimation enthalpy, delta H sublimation। जब आयनाइजेशन एंथैल्पी ही बहुत वेरिएशन है उसमें, रेगुलर ट्रेंड नहीं है वहां पे, तो फिर ई नॉट विच डिपेंड्स ऑन आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो उस पे कहां से हो सकता है? ठीक है, दिस इज वन पॉइंट। अगला है आपके पास, देयर आर फ्यू मोर ट्रेंड्स। तो कॉपर का हो गया। देन वी हैव जिंक। व्हाट हैज बीन सीन फॉर जिंक इज, आप लोग को ये दिखा दे क्या पहले? लेट मी गिव यू द, देखिए दिस इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो कि वोल्टेज में है। तो हम लोगों ने देखा कॉपर का कैसा आ रहा है, कॉपर का आ रहा है पॉजिटिव, है ना, सबका नेगेटिव है, कॉपर का क्या आ रहा है? कॉपर का पॉजिटिव आ रहा है। तो वी हैव एक्सप्लेन दैट पार्ट। और सुन लीजिए, यहाँ पे आप लोगों को देखिए एक एक्सेप्शन और नजर आना चाहिए, दैट इज रिगार्डिंग एक तो एमएन, मैग्नीज और जिंक। इट इज एक्सेप्शनली लो, यस और नो प्लीज टेल मी। Yes, sir. है ना? इट इज एक्सेप्शनली मोर नेगेटिव। ठीक है, इट इज एक्सेप्शनली व्हाट? इट इज एक्सेप्शनली मोर नेगेटिव। वही सेम रीजन है। देखिए एक तो सबसे पहली बात यहाँ पे लिखिएगा, मैग्नीज और जिंक के बारे में जब भी कोई बात आती है ना, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं? D5 कॉन्फ़िगरेशन, D10 कॉन्फ़िगरेशन। एक तो ये बात आप लोग चिपकाइएगा ही चिपकाइएगा। ठीक है, राइट पॉइंट हियर, E नॉट ऑफ manganese and Zn is relatively
more negative, ठीक है ना, दिस इज बेटर स्टेटमेंट, मोर नेगेटिव, ठीक है। किससे, लेकिन कंपैरिजन किससे हो रहा है, क्रोमियम से हो रहा है, कंपैरिजन किससे हो रहा है, कॉपर से हो रहा है, ठीक है। इन सब चीजों में कंपैरिजन हो रहा है, तभी नेगेटिव है ना, मोर नेगेटिव है। नाउ इट इज हैपनिंग बिकॉज अगर आप क्रोमियम को देखें, देन क्रोमियम 2 पॉजिटिव, इट इज 3d4, और कॉपर 2 पॉजिटिव, इट इज 3d9। वहीं अगर Mn2 पॉजिटिव को देखें, Mn2 पॉजिटिव इज 3d5 एंड जिंक 2 पॉजिटिव इज 3d10, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस 3d5 एंड 3d10, व्हाट इज हैपनिंग, देयर इज मोर स्टेबिलिटी। द रीजन इज ड्यू टू higher stability of due to higher stability of क्या था, D5 in Mn 2 positive and D10 in Zn 2 positive, ठीक है। एक तो ये रीजन है। इसमें एक और रीजन है जो कि छुपा हुआ है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में, ठीक है। अब हम लोग आगे जाते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन जब हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ देखिए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में वी सॉ दैट जैसे जैसे ये आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, Mn में एक तो there is a decrease in the atomization, and because the D10 configuration है यहाँ पे, the D10 configuration में the metallic bonding is not very strong। जिंक में, कॉपर में आते आते ही it is has got very low, तो जिंक में और ज्यादा लो हो जाता है, ठीक है। another reason is what, the enthalpy of atomization and sublimation, या sublimation, it is very low also। the delta H atomization or delta H sublimation of Mn and zinc are low, ठीक है, आर लो। ये दो रीजन आप लोग को डाल देने। D5 D10 डाल दीजिएगा, इतना भी आप लोग के लिए काफी होगा, ठीक है। D5 D10 भी आप लोग के लिए काफी होगा। एक और जो आप लोग को यहाँ पे एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, दिस विल बी रिगार्डिंग निकल। निकल में अगर आप देखें, राइट, E नॉट ऑफ निकल is relatively more negative, is relatively more negative, more than expected होता है निकल का, ठीक है। Now what is the reason for nickel? निकल के लिए रीजन होता है उसका एटॉमिक साइज। if you see here, nickel is going to have very small size, ठीक है। नेक्स्ट लिखिएगा स्मॉल साइज, उसके आगे हम बता रहे हैं आपको। निकल 2 पॉजिटिव हैज वेरी स्मॉल साइज। आपके पास छोटा साइज है और पॉजिटिव चार्ज उतना ही जितना बाकी के पास है, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, कॉपर, जिंक, ऑल ऑफ देम आर हैविंग 2 पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। बट द साइज ऑफ निकल इज स्मॉल, because it is having small size and the charge is same, the charge density increases. Nickel 2 positive has very small size, leading to high charge density। चार्ज डेंसिटी जब ज्यादा होगा, देन द वाटर मॉलिक्यूल का H2O मॉलिक्यूल्स, द H2O मॉलिक्यूल्स विल बी अट्रैक्टेड मोर इफेक्टिवली। चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, अगर मास डेंसिटी ज्यादा तो ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्ट ज्यादा होगा। चार्ज डेंसिटी अगर ज्यादा है आपके पास, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द water molecules will be attracted very easily। जो negative charge oxygen atom है, it will be attracted very easily। when they are attracted very easily, that means the hydration enthalpy will be quite higher। so nickel 2 plus has very small size, leading to high charge density, which results in
हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी। यहां तक समझ में आया सबको? ये सुनो प्लीज मी गाइस। Yes, sir. चलिए, सो अब आपके पास क्लास में हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, एक काम कीजिए, थोड़ा सा है ऑफर के बारे में पढ़ा दें और छोड़ दें। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट में देख लेंगे कॉपर का। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देंगे। विल रिक्वायर आई थिंक 2 more क्लासेस, तभी जाके खत्म